Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyid al-Anbiya'i wal Mursaleen. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق अल्लाह अज़ीम। आए एक ज़बान होकर और अपने दिलों के तार को मदीने पाक से जोड़ते हुए सभी हजरात आक़ाए दो जहां मदनी ताजदार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिये दुरूद पाक पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। Respected brothers and sisters, you all know why we are here. We are here to talk about our beloved Nabi Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are here to celebrate the Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. And alhamdulillah, those who came on time, may Allah subhanahu wa ta'ala reward them well. We are blessed and fortunate people that instead of, wasting our weekend in some other activities, we are here talking about Allah and His beloved Nabi, Quran and Hadith, alhamdulillah. So may Allah subhanahu wa ta'ala accept our attendance. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant all of us tawfiq to be Jannah together, inshallah. Jannah, inshallah. Ameen, Ya Rabbal Alameen. एक हमारा मामूल है और बड़ा ही खूबसूरत मामूल है, वो ये है कि हम अपनी किसी भी महफिल का आगाज तिलावत कलाम मजीद से करते हैं इंशाअल्लाह रहमान। तो आज भी हम वही करेंगे, मगर उससे पहले मैं एक हदीस आपके सामने पेश कर दूं। I just want to quote this beautiful hadith. So you should know why we are here and why we should talk more about our Nabi, beloved Nabi Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In entire Quran, entire Quran that talks about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But there are few things that actually mentioned in this beautiful hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, that's a beautiful narration. Rasulullah said, "U'titu khamsan lam yu'tihinna ahadun qabli." Allah subhanahu wa ta'ala has granted me 5 things which Allah has never ever given to any other Nabi before me. 5 things. 5 चीजें अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी दी हैं कि जो मुझसे पहले किसी को मिली ही नहीं। और मैं समझता हूं कि हमें अब इसको गौर से सुनना है। क्यों सुनना है, पता तो चले कि हमारे नबी के पास वो क्या 5 चीजें खुसूसियत के साथ में। और मैं कहता 5 नहीं, वैसे बहुत है, लेकिन ये 5 रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेंशन की, कुरान मुक़द्दस ने भी कई जगह पर जो ना जिक्र किया है, मिसाल मेहर वगैरह के मामला, तो उसमें आगे फरमाया खालिसतन लका मिन दूनिल मुमिनीन, कि नबी ये खास आपके लिए है, मोमिनीन के लिए मामला नहीं है। सुभान अल्लाह। So these 5 things, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, I'm the only one who was given specially. No one else actually got before me. The first thing, bu'ithtu ila qawmihi khasan wa bu'ithtu ila kulli ahmara wa aswada. Kana kullu nabiyyin yub'athu ila qawmihi khasatan. Before me, all the prophets and messengers, they came to a particular space, boundary, tribe, particular people. Right? So now Isa alayhi salam came in Palestine, and he was only for that particular area. As Musa alayhi salam came, as Yusuf alayhi salam, all of them, they came into their own people, and he was Nabi for certain tribe, certain country, boundaries. Allah's beloved Nabi Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, Allah has sent me, made me Nabi and Prophet for entire human being, all the human being, entire universe, including animals, black, white, every single person. Alhamdulillah. Quran iski ta'id karta, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadira. नबी हमने आपको यानी इंसानियत की जितनी भी किस्में हो सकती है उन सब के लिए आपको नबी बनाकर भेजा है। ठीक है। सो ये एक रसूल पाक की रिसालत आम है। इसको आसान लफ्जों में हमारे उस्ताद कहते थे कि आप टोन समझें। अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल
आलमीन। तमाम तारीफ उस रब के लिए जो आलमीन का रब है। और रसूल पाक के लिए आयत है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन है उसके रसूल पाक रहमतुल लिल आलमीन। ठीक है, that is why we need to talk more about our Nabi, beloved Nabi Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says wa uhillat lil ghanaima wa lam tahillu li ahad al qablin. Allah subhanahu wa ta'ala has made mal ghanimat, any mal which comes after a battle, it is halal for me. Previously it was not halal for anyone. Mal ghanimat is actually a wealth when two people, two tribes, two countries, two armies, when they fight with each other. One is the winning, the other one is losing. So the winning actually take all the things, everything, and it gets distributed in the people, those who are fighting. But prophets and messengers, they never used to get it. But Allah subhanahu wa ta'ala has made this thing halal for Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Third thing, وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضِ طَيِّبًا طَهُورًا وَمَسْجِدًا. And Allah subhanahu wa ta'ala had made for me and my ummah entire earth as pure, clean and masjid. यानी अल्लाह ताला ने सिर्फ मुझे ये एहसास दिया है कि मैं और मेरे उम्मती इस पूरे रुए जमीन पर जहां चाहे नमाज अदा कर सकते हैं. Previously, it was a certain place you have to build as a masjid. You have to build as a place of worship. So your people can go and they do worship. But alhamdulillah, we are fortunate. We are driving Uber, we are driving taxi, limousine. We are in a doctor clinic, we are anywhere in the building, we are on the boat, we are in the airplane. And if there's namaz time and you have intention to pray, what you have to do? Just make wudu and start. Just make wudu and start. ये सिर्फ इस उम्मत को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिला है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे लिए पूरी रुए जमीन को अल्लाह ताला ने तय्यब, ताहिर और मस्जिद बनाया है. और चौथी चीज, the fourth one, وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيْ مَسِيحِ الشَّهْرٍ. And Allah subhanahu wa ta'ala has granted me ru'b, a power that other person can be impressed by me just by, even if he is 1 mile away from me, he will be impressed. If I am there and if I am presented somewhere, he will be impressed no matter what. अब वो होता क्या है आपको मैं बताऊं कि कभी ताशुब का ऐनक इंसान का बड़ा सख्त होता है, लेकिन हुजूर पाक की दहशत रुअब ऐसा था. कल मैं एक रिवायत पढ़ रहा था, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैंने देखा है कई मर्तबा कि ये जो कुफ्फार और मुशरिकीन हुजूर को बुरा भला कहते थे ना, जब कभी हुजूर के आमने सामने होते और आंखों में आंखें डाल के जब बात करते, मैं फील करता था कि इनकी टांगे कांप रही है और दूसरे लफ्जों में इनकी कांपे टांग रही है. यानी रसूल पाक के सामने इतनी दहशत, इतना रौब हुआ करता था. लेकिन वो क्या होता था कि जब हुजूर सामने नहीं होते थे तो उनकी मुखालिफत जाग जाती थी. हमारे इम्तियाज भाई, तनवीर भाई हमारे एवरीडे सीरत के प्रोग्राम में आ रहे हैं और हमने एक रिवायत पढ़ी थी हम्मालतल हतब फी जीदी हाब्लिम मिन मसद. किसके बारे में ये? दिस इज अबाउट द वाइफ ऑफ Abu Lahab, Jamil. She heard that Quran has revealed a surah insulting her and her husband. Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahabin. She said, okay, let me go and talk to Prophet Muhammad. She said, Rasulullah and many other people, they were sitting. She came and she said, oh Abu Bakr, where is your friend Muhammad? And Rasulullah sitting right next to him. Where is your friend Muhammad? I heard that he got a revelation from Allah subhanahu wa ta'ala talking bad about me and my husband. And said that Abu Bakr is looking at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. How come she is telling me that where is your friend Muhammad? So then Abu Bakr asked her, so why can't you say? She said, whenever I'll see, I'll talk to him. And I'll do this and that. She said so many things she went. Then said Abu Bakr asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what happened? She could not see you. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, Allah subhanahu wa ta'ala has built a wall between her and me, and this is my robe. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's power, alhamdulillah, protected. कि कोई अचानक से आकर ऐसे इंसल्ट न कर जाए, अल्लाह ने उसके और मेरे दरमियान एक दीवार कायम कर दी, मुझे देख ही नहीं सकती. ये रोब है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. और आखिरी और सुभानअल्लाह, ये तो नेमत है. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम says in the fifth thing which Allah has granted me and no any other God before me, that is, وَأُعْطِيتَ بِالشَّفَاعَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala has granted me shafa'at. Alhamdulillah.
On the day of judgment, inshallah, our Nabi, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will be doing shafaat for all of us. Bukhari ki ek hadith aapke samne quote karta hu, hai na? Bukhari ki ek hadith quote karta hu. Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam says, He's created a beautiful, atmosphere talking about Qiyamah. And he said, do you know, on the day of judgment, when Allah subhanahu wa ta'ala will, people will be asking their questions, everybody will be accountable, and half of the day will be gone. और ये बड़ा अहम है. हम सोचते हैं कि हम जाएंगे और डायरेक्ट हमारी शफाअत हो जाएगी. नहीं, ये कॉन्सेप्ट आप रखो मत. 50,000 साल का अगर दिन है और आधा दिन गुजरने का मतलब है 25,000 साल. कितना? 25,000 साल. हमारी जिंदगी को कोई हजारों लाखों मर्तबा मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ये फिगर आता है आपका. बल्कि मैं कहता हूं हजरत आदम से अब तक भी ना 8,000 साल हुए हैं. तो आप अंदाजा कर लो कि इस पूरी कायनात का टोटल जो बनता उससे बड़ा आधा दिन होगा. उससे बड़ा आधा दिन होगा. उसके बाद अल्लाह ताला शफाअत की इजाजत देगा. तो इसीलिए ये गुनाह या जो ना नाफरमानियां करते वक्त ये ना ख्याल करें कि हमारे नबी तो है, हमारी शफाअत करवा देंगे यकीनन. लेकिन तो उससे पहले का जो 25,000 साल है, 10,000 साल है, 20,000 साल है, उसमें क्या होगा हमारा? लिहाजा वो भी एक सख्त दिन है ना. सूरज तो सवाल से पर होगा. अपने आप को बचाए. So when Allah subhanahu wa ta'ala will allow his anbiya, prophets and messengers, okay, now shafa'at is being allowed, is permitted. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will be so sad. Allah subhanahu wa ta'ala will ask, "Oh Nabi, why you are so sad?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will say, "I'm sad because so many people in my ummah, they are in Jahannam, and I want to protect them. There are so many people out over here waiting for mercy." Allah subhanahu wa ta'ala will say, "Okay, all right, anybody who have done any good deed in their entire life, or Rasul, you can take them into Jannah. Anybody who has done any good deed." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will bring millions of people, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will take them into Jannah, and he will come and he will do sajda in front of Allah subhanahu wa ta'ala, and he will do tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah says, the tasbih I'm going to say at that time, right now I do not even remember, but the words I will say, that will be the best tasbih ever. Nobody has said that before. Allah subhanahu wa ta'ala will ask, Ya Rasulullah, oh my Nabi, what happened? I'm still not seeing you very happy and pleased. He said, Rasulullah says, I will say to Allah subhanahu wa ta'ala, I'm still seeing millions of people in Jahannam. What should I do? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will be saying, okay, anybody who has just ever said, La ilaha illallah into your ummah, just pick them up and take them into Jannah. जिसने कभी भी सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहा होगा, आप उन्हें ले और जन्नत में चले जाए. हुज़ूर फरमाते मैं इन सबको लूंगा, जन्नत में छोड़ कर आऊंगा, अल्लाह की बारगाह में सजदा करूंगा, और ऐसा खूबसूरत सजदा, ऐसी खूबसूरत तस्बीह जो पहले किसी ने नहीं बयान की होगी. अल्लाह फिर फरमाएगा, ओ नबी, why I'm not seeing you so pleased yet? Why you are not so happy yet? We'll say, oh Allah subhanahu wa ta'ala, these are those people who were outside of Jahannam. But so many people are already, because their hisab kitab came earlier, they're in Jahannam. What should I do? Allah subhanahu wa ta'ala says, anybody who has just, anybody who has faith in me, iman on me, by equal of mustard seed, mustard seed, rai ke dani ke barabar, equal, very tiny iman they ever had in their heart, even though they are in Jahannam, you go pick them up and you drop them in Jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will, go, and this time Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will pick, billions of people, will drop them into Jannah, and then Rasulullah says, I will do sajda for 500 years, the longest sajda, and I'll do tasbih, and I will say, oh Allah subhanahu wa ta'ala, now I'm happy. Allah will, this is the tafsir of ayah, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. और नबी हम आपको इतना नवाजेंगे उस दिन के आप खुश हो जाओगे. रसूल पाक उसके बाद खुश हो. ये पांचवी चीज, उअतीत बिशफाअह, कि अल्लाह शफाअत अता फरमाएगा. And I'm telling you one more thing. When shafa'at will be open, will be open for everybody, in this ummah we are so fortunate. After the shafa'at al-kubra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shafa'at,
it will be open for people too. Ulamas, they will be able to do shafaat for their students, people. And Sadat, they will be doing shafaat for those who actually took care of them. Elders, they will be doing shafaat for many people. And Haji, Hafiz, everybody will start. Though when one narration, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, a mother whose child actually got abort, not with her permission, but she had miscarriage. Child did not come actually into this dunya. That child, the piece of meat, the one who actually did not come into this dunya, Allah subhanahu wa ta'ala will give that child a power to do shafaat of his mother, the one who actually had hardship, at that miscarriage time. Subhanallah. इसीलिए हम जनाजे की दुआ में क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा जअलहु लना अजरन व ज़ुखरन व जअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अ, कि अल्लाह ये जो जनाजा है इनको मेरे लिए शाफ़ी और मुशफ़्फ़अ बना, शफाअत करने वाला बना। तो इनमें से वो जिनको वो अल्लाह ने क्वालिटी दी होगी, कभी हाजी होंगे, हाफिज होंगे, आलिम होंगे, या कौम के बड़े लीडर होंगे, अल्लाह उन सबको इजाजत देगा। और फिर आखिर में वो बच्चा जो पूरी तरीके से वजूद में भी नहीं आया, मिसकैरेज होकर गिर गया, इसमें दोनों माँ बाप की इंटेंशन शामिल अगर नहीं थी इसको गिराने की, तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, उन बच्चों को अल्लाह ये पावर देगा कि चलो तुम अपने माँ बाप की शफाअत करवा लो। सुभान अल्लाह। तो ये 5 चीजें हमारे नबी को अल्लाह ने दी है। So we have to talk more about our Nabi, beloved Nabi, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Why? So we should know this is my Nabi, this is our Nabi, so we can have love towards Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and we can obey our Nabi, beloved Nabi, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.